राष्ट्रीय आंकड़ा देखेंगे तो ये उससे कहीं ज्यादा है। हर 4 में से 1 नौजवान बेरोजगार है। शहरों में स्थिति और विकट है। सरकारी नौकरियों के विषय में इस मंच से पहले भी बहुत चर्चा हुई है कि कितनी वैकेंसीज हैं और वो नहीं भरी जाती क्योंकि नियत में नहीं है कि किसी को नौकरी दी जाए। जो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में लोग जाते हैं, छोड़कर उत्तर प्रदेश को, पलायन जिसको हम कहते हैं, वह भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है। 16 में से 1 व्यक्ति उत्तर प्रदेश का छोड़ के अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने शहर को उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है नौकरी की तलाश में। यही हाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य का भी है। 2,77,000 टीचरों की कमी हो जिस राज्य में, वहां आप शिक्षा का स्तर क्या होगा यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप हमसे ज्यादा समझते हैं। जो नवजात बच्चों की मृत्यु होती है 35.7%, हर 100 में से 35 बच्चे नवजात पैदा होते ही मर जाते हैं। यही हाल शिशु मृत्यु दर का भी है। लगभग 60% शिशु मृत्यु दर, ये सब राष्ट्रीय अनुपात से कहीं ज्यादा अधिक है। यही हाल डॉक्टरों का है। डॉक्टर जितने चाहिए उतने नहीं हैं, नर्सेज जितनी चाहिए उतने नहीं हैं। ये सारे आंकड़े प्रेस रिलीज के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे और ये आंकड़े हमारे नहीं है, नीति आयोग के आंकड़े, सरकार के आंकड़े। यह सरकार आंकड़े छिपाने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन आंकड़े और सत्य हमेशा निकल कर आ ही जाता है और सताता है। मैं ससम्मान उत्तर प्रदेश के वोटरों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर आप क्या सोचकर वोट दे रहे? ये आंकड़े जो आपके सामने रखे, आपके जहन में ये आंकड़े आते हैं जब आप बटन दबाने जाते, जब आप सुनते हो आप किसको वोट देंगे? आदित्यनाथ जी की सरकार एक तानाशाह सरकार है। महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गई। जिसमें जातीय एवं मजहबी उन्माद फैलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। क्या आप इसके लिए वोट देंगे? परिवर्तन का अब समय आ चुका है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से एक अपील करता हूं कि एक ऐसा वक्त है, एक ऐतिहासिक मोड़ पर आपका राज्य खड़ा है। सही बटन दबाएंगे तो परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन सोच में भी आएगा, शासन करने की प्रणाली में भी आएगा, और मेरे और आपके भविष्य में भी आएगा। नमस्कार। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास माइक पहुंच जाएगा। और परिवर्तन सोच में भी आएगा, शासन करने की प्रणाली में भी आएगा, और मेरे और आपके भविष्य में भी आएगा। नमस्कार। I'm not the first one to address a press conference. Very distinguished colleagues of mine have addressed press conferences. और परिवर्तन I have सोच में come भी to आएगा, address a press conference शासन today. करने की प्रणाली में भी There आएगा, are 2 more और मेरे rounds और of आपके election. भविष्य में भी आएगा। So this is not the नमस्कार। first press conference, and therefore you'll have to read it as part of a continuous exercise of briefing the press from time to time. I'm sure my colleagues have addressed I'm not the several first press one to conferences address a press on this conference. point. Mr. Chidambaram, very please sir, very आपने जो आज distinguished आंकड़े पेश colleagues किए, of mine have ये addressed press अगर आप conferences. 7 चरण से पहले पेश करते थे तो 2.5 चरण रह गया। शासन करने की इस प्रणाली समय में भी क्या आएगा, पोजीशन बदल और सकती मेरे है? और आपके भविष्य में भी So आएगा। this is not the नमस्कार। first press conference, and therefore you'll have to read it as part of a continuous exercise of briefing the press from time to time. I'm sure my colleagues have addressed I'm not the several first press one to conferences address a press on this conference. point. Mr. Chidambaram, very please sir, very आपने जो आज distinguished आंकड़े पेश colleagues किए, of mine have ये addressed press अगर आप conferences. 7 चरण से पहले पेश करते थे तो 2.5 चरण रह गया। शासन करने की इस प्रणाली समय में भी क्या आएगा, पोजीशन बदल और सकती मेरे है? और आपके भविष्य में भी So आएगा। this is not the नमस्कार। first press conference, therefore you'll have to read it as part of a continuous exercise of briefing the press from time to time. I'm sure my colleagues have
I'm not the first one to address a press conference. मिस्टर चिदम्बरम, प्लीज सर, आपने जो आज आंकड़े पेश किए, ये अगर आप सातों चरण से पहले पेश करते थे वो तो 2.5 चरण रह गया। शासन करने की इस प्रणाली समय में क्या भी आएगा, पोजीशन जो बदल सकती मेरे है? और आपके भविष्य में भी आएगा। चिदम्बरम साहब, First press conference. अभी पवन खेड़ा जी ने प्रियंका जी की चिंता प्रकट की है, वो चिंतित हैं। Briefing the press. प्लीज सवाल तो सुनिएगा पहले। Sure, my आपने चिंता प्रकट की I'm है, not ये the चिंता first one to address प्रियंका a जी press की conference. कांग्रेस की मिस्टर चिदम्बरम, प्लीज या सर, फिर जो आपने जो आज आंकड़े पेश चिदम्बरम किए, साहब आप मुकाबला करने में विफल रहे हैं, उसके कारण है। Oh yeah. This is a concern that many Congress leaders have already shared with the people. This is my concern too, and I'm sure Srimati Priyanka Gandhi Vadra has shared these concerns. We are directly speaking through you to the people of UP. Please remember, as I landed today in the airport, I was thinking about UP. I said this is potentially the richest state in India in terms of land, in terms of fertility, in terms of hard-working people, in terms of labor force, in terms of the two perennial rivers. UP is potentially the richest state in India. But why is it so poor? You sent 8 prime ministers, and if you count Mr. Narendra Modi, also it's a 9th prime minister, and yet you are so poor. In 3 districts, 70% of the people are poor. Therefore, we are directly asking the people of UP, what are you voting for? Are you voting for some illusory past, or are you voting for a future? I'm sure these concerns have been expressed by my colleagues. I am glad I have an opportunity to come and speak to the people of UP through you directly and say, please tell me what you are voting for. If I was a voter here, I will ask myself, what am I voting for? Voting for doctors, voting for education, voting for better health care? Or what are we voting for? Sir, myself Ajit Bisaria from Amar Ujala. I read your article in Statesman in English, also in its Hindi version in our newspaper. Your articles give us important facts to think, to rethink, as we consider. Here my question is, can we reduce unemployment? Can we reduce unemployment to 0%? Can we if yes, how can we get this target? My next question is, okay. See, no country can reduce unemployment to 0%. But you can bring it down to close to 0. No country can reduce unemployment to 0%. If you are reading my articles, I'm very grateful you are my reader. Please read the column last Sunday. That is the column that appeared on the 20th of February. I've given out a whole list of jobs that can be created. The jobs are there. I read it, sir. We just don't discover the jobs. Yeah. In fact, the first line of the article is, jobs are hidden in plain sight. There are millions and millions of jobs can be created in this country if only we open our eyes and look at what the jobs are. I'm glad you're my reader. Thank you. Sir, my next question: how can we increase? How can we increase our GSDP? In UP? Yes. In terms of UP. In UP, you can increase your GSDP only if we get rid of this government which has no knowledge, no concern,
no understanding of the economy. My reading of Mr. Adityanath is he has simply zero understanding of economy. Well, I can't answer that question. I can't answer the question. Mr. Rahul Gandhi has campaigned in all the states, and I think he has begun to campaign in UP. Really, I can't answer the question. You see, what I said is, the GSDP is the denominator, debt is the numerator. If you look at the proportion of debt to the GSDP, I've already said it stands at 34.2% of GSDP. That is UP specific. Now, how did this debt accumulate? UP has been a state for many years, or nearly 70 years now. 40% of the 6,62,000 crore was added in the last 5 years by Mr. Adityanath. 40% of the debt is added by Mr. Adityanath's government. This government has been borrowing. There's no harm in borrowing. Borrowing adds to the numerator. If your GSDP grows, then there's no harm in borrowing. But your GSDP has not grown and you are borrowing merrily, which is why your debt stands at 6,62,000 crore. 1920 are pre-corona years. 2021 and 21-22 are post-corona years. So answer to your question is both. It happened pre-corona and post-corona.